नेहरू, जवाहरलाल चाचा was the nickname of Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru was the first Prime Minister of India. आउ कौन जवाहरलाल नेहरू पर कंट्रीब्यूशन अछि वर्ल्ड अफेयर रे नेहरू पर आउ कौन कंट्रीब्यूशन रही छी नेहरू यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इंडिया पे कंट्रीब्यूशन कौन पंचशील एग्रीमेंट आउ नेहरू पर कंट्रीब्यूशन कौन नॉन अलाइड मूवमेंट आउ नेहरू पर कंट्रीब्यूशन कौन एशियन गेम्स आउ नेहरू पर कंट्रीब्यूशन कौन सोशलिस्टिक प्रिंसिपल आउ नेहरू पर कौन फॉरेन पॉलिसी आउ पुणी नेहरू पर कौन अब हुआ नेहरू पर ग्रेटेस्ट कंट्रीब्यूशन रहउची इंडियन प्लानिंग तेणु नेहरू कहू आम कहू आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया आधुनिक भारत वर्षर निर्माता नेहरू so students listen to what Nehru had depicted relating to his childhood आम जीवन रे जत्ते पिला आसुची गोटे गोटे रिलेटिंग टू स्टेजेस आमर वाइटल स्टेज बा प्रीमोटल स्टेज होची चाइल्डहुड वर्तमान तमे अच्छा चाइल्डहुड रे ना तमे को एज रे अच्छा पिले गेटिंग टुवर्ड्स टीन इयर्स तमे वर्तमान तम पे एतेटा हर्डल आसीनी जेते बेले तमे ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दे पर सारीबो जेते बेले तमे भाबिबो प्रकृति रे आम पे आम पिला दिनटा केते भलो पिला So students, childhood it is written by Jawaharlal Nehru. Introducing the author, Jawaharlal Nehru was born in 1889 and died in 1964. A freedom fighter and statesman, is the first premier of independent India from 1947 to 64. Listen students, Nehru independent India architect by modern India architect ताको कहां कि आधुनिक भारत वर्ष रे निर्माता बोली जदि हमें कहबा पॉलिटिकल फील्ड रे सोशल फील्ड रे इकोनॉमिकल फील्ड रे ट्रेड आउ बिजनेस फील्ड रे आउ सबुठरो बड़ जिनिस होची इंटरनेशनल रिलेशनशिप रे प्रत्येक फील्ड रे नेहरू पर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन इंडिपेंडेंट इंडिया बेले से जेल गले तांको भली गोटे रिचेस्ट पर्सनालिटी तांकर कोन थिला जेल जीवा दरकार पुणी जदि हमें कहबा इंडिया इंडिपेंडेंट हैला 15 अगस्त 1947 आउ 1947 रो 1964 17 वर्ष इंडिया रहले थे सुप्रीम एक्चुअली लीडर हमर द प्रीमियर फर्स्ट प्रीमियर जदि कहबा ये जो रहिला ट्रांजिटरी पीरियड 17 वर्ष जाक इंडिया रे कांग्रेस पार्टी हैला डोमिनेंट कांग्रेस ताले कोन होला सोल अथॉरिटी होला परफॉर्मेंस कला कोन एक्टिविटीज रे एवं जहां भी डेवलपमेंट करथिला से तबे हमें कहबा इंडिया रे बदे वन डोमिनेंट पार्टी थिला that is India versus Nehru versus India. So students आमे जते बेले कहबा statesman in the sense greatest spokesman for other जे अलगा माने को पई किछि कुए से भारत माने को पई किछि कहले आउ थिले माने रख यदि हमें कहबा fighter and a statesman is the first prime minister of independent India from 1947 to 64. He is highly respected for his instinctive sense of diplomacy. What is the meaning of a diplomacy? Diplomacy is one of the means of a foreign policy. गोटे राष्ट्र उन्नत हुए केते बेले जहार वैदेशिक नीति भलो वैदेशिक नीति माने गोटे राष्ट्र सहित आउ गोटे राष्ट्र संपर्क स्थापन करबा जा द्वारा हमर रहिबो कोन ना गिव एंड टेक रिलेशनशिप रहि परिबो मु उदाहरण स्वरूप कहबी इंडिया रे होची मैक्सिमम टी असम रे लार्जेस्ट टी प्लांटेशन इंडिया टी रे सेल्फ सफिशिएंट क्यूबा सुगर केन चीनी रे सेल्फ सफिशिएंट इंडिया संपर्क रखिबो क्यूबा सहित क्यूबा संपर्क रखिबो इंडिया सहित आ भीतर कोन रहिबा दरकार फॉरेन पॉलिसी रहिबा दरकार वैदेशिक नीति रहिबा दरकार तेणु नेहरू के समय रे हमर सुप्रीम थिला वैदेशिक नीति हम पई कोनसी राष्ट्र बाहर राष्ट्र केही शत्रुता करू नथिले इवन से आइसोलेटेड वर्ल्ड रो इन्वॉल्वमेंट आनितिले रिलेटिंग टू हमर एशिया इंडिया India, Asia, Asia, Europe, Europe, Asia, and Europe, India. We will learn it from its chart. So, students, great knowledge of international affairs. What is the meaning of international affairs? International affairs in the sense, one country must not stay isolated. तमे कहला पिले तमे केबे गोटे गोटे पिला कहंदनी मु एनके आ का संगे सांग हबिनी कोन एका एका रही धर जे गोटे रूम रे 5 जण सांग अछन
से 4 जन बाहर को जीवे ये एकुटिया रहिला से तळे बिराडी आसिकरी आपुडी डोर जेतर कुरकुर करे आपुडी से रहे भूत आइला रे साइपेल का किछि सुरी बुझतला से आटला कि मो कर तेणु विभिन्न प्रकार भय आसिकरी पहुंचीब आम समाज रे कौन से लोक 100% आइसोलेटेड होके रहि परिबेनी गोटे जणे लोक आउ जण लोक पर डिपेंड करिवो गोटे राज्य आउ गोटे राज्य पर डिपेंड करिवो गोटे गां आउ गोटे गां पर डिपेंड करिवो गोटे कंट्री आउ गोटे कंट्री ऊपर डिपेंड करिवो देन एंड देयर ह्यूमन लाइफ वुड बी सर्वाइवल ताले हमें सर्वाइव करि परिबा He is a prolific writer in English and wrote a number of books such as The Discovery of India, Glimpses of World History, and his autobiography Towards Freedom, Discovery of India. Finest creation, monumental works of Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru, but a potent writer, excellent English writer. आमे जदि देखिबा इंडिया रे जो माने भी अछंती भलो भलो राइटर को भितरे तमे जानि दिबो इफ यू कंसीडर द केस ऑफ आर.एन. ठाकुर if you consider the case of K. Munshi, if you consider the case of M.K. Gandhi to a certain extent, but the excellent one I feel is the Jawaharlal Nehru. Jawaharlal Nehru जो गुटे तंकर लिखिथिले monumental work that means reported books, the Discovery of India, Glimpses of World History and his autobiography Towards Freedom. एवं से भी मध्य लिखिथिले गुटे जानिथिबो स्टोरी letter from a father जेल रे थिला बेले जवाहरलाल नेहरू कहा पाकु लिखिथिले इंदिरा गांधी को पाकु लेटर फ्रॉम ए फादर टू ए डॉटर दैट इज आल्सो अलार्मिंग हिस्ट्री ए नोबल पर्सपेक्टिव सो स्टूडेंट्स childhood is an expert from Nehru's autobiography read the following of the text and acquaint yourself with how Nehru felt about the presence of English men in India during his childhood जदि हमें देखिबा ये चाइल्डहुड रे प्रकृति रे नेहरू कोन डिपिक्ट करिछन नेहरू डिपिक्ट करिछंदी ए काई को पूछेडी आज तो फर्स्ट वार्निंग और लास्ट वार्निंग बुझेलो कोन पढु छ पचन मते पचारे जति की पचाले ना कहि परबो इंसान कर पे पिलांगे listen child is an expert from Nehru's autobiography read the following unit of the text and acquaint yourself with how Nehru felt about the presence of Englishmen in India during his childhood. Actually, students, morning shows the day. तुलसी उई पत्र को वासे नेहरू कर छोट बेल दिला एक्सपर्टाइज ब्रिटिश माने हम देश को शासन करते आमे केमिति कोन तांका एंकरिंग चेन रो मुकुळीबु दैट इज द स्पिरिट ऑफ इंडिपेंडेंस इवन तांका जियो जानि दिबो इंदिरा गांधी से गठन कर देले वानर सेना ब्रिटिशर माने कोठी कोन ऑर्गेनाइज करिवे एमन सब जाई कि सिक्योरिटी से तथ्य गुडा आनि के देबे कोठी की ता क्लासिक लीडर मानको सो स्टूडेंट्स दिस topic wholeheartedly relates with India's freedom movement and how Nehru was subjecting himself from his childhood towards adulthood towards the death for the living organism of India's biological life. That is the spirit of Jawaharlal Nehru. So, my childhood was thus started on event of it. I listened to the grown-up talk of my cousins without always understanding all of it. Often this talk related to the overbearing character and insulting manners of English people, as well as Eurasian towards Indians, and how it was the duty of every Indian to stand up to this and not to tolerate it. Actually, students, a person mixed with another on the basis of one's culture. जने लोक जते बेले आउ जने लोक सहित भेटिबा को चेष्टा करे से आइडेंटिफाई करे मोर कल्चर कोन ता कल्चर सेया तो तमे पळेलो महाकुंभ मेला को सेठी देखिलो गोटे लोक तमिल रे कथा होउची गोटे लोक कन्नड़ रे कथा होउची गोटे लोक बेंगल रे कथा होउची गोटे लोक देखिलान को ओडिया रे कथा होउची हमर स्पिरिट ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड पळेला भाई तम घर को रातुल का ना मोर का कटक फ्रेंडशिप हेला ना नहीं that is on the basis of a culture even culture the first aspect of the language second aspect is religion तो नेहरू कर कांसेप्ट रही दिला ब्रिटिश रा कल्चर हम इंडिया रा कल्चर थार फरक हमें जेहेतु इंडिपेंडेंट हेइनु तन कर ब्रिटिश कल्चर को हमको ऑब्जर्व करिया को पड़ुची एवं हम इंडियन कल्चर को अब्सटेन करिया को पड़ुची तनु जदी ब्रिटिशर माने फॉर गुड इंडिया को लेफ्ट करिवे ताले हमें हम कल्चर को बंचै देई परिबा
एवं सेतिपई से कौन करले तांकर जो रिलेटिव थिले तांकर जो की एंड किन थिले तांकर कजन मान पाखु सुनुथिले कौन सुनुथिले ना ब्रिटिशर माने इंडियन मान को समालोचना करुथिले कोउथरे समालोचना करुथिले on the basis of this in depth difference of a culture आम रिलीजन अलग ब्रिटिशर मान रिलीजन अलग आम लैंग्वेज अलग ब्रिटिशर मान लैंग्वेज अलग आम कस्टम अलग आम ट्रेडिशन अलग व्हिच इज सेपरेटेड फ्रॉम दैट ऑफ द ब्रिटिशर्स so students one term used here is Eurasians Europe and Asia Eurasians so students instances instances of conflict between the rulers and the ruled were common and were fully discussed. It was a notorious fact that whenever an Englishman killed an Indian, he was acquitted by a jury of his own countrymen. In railway trains, compartments were reserved for Europeans and however crowded by the train might be, and they used to be terribly crowded. No Indian was allowed to travel in them, even though they were empty. Listen, students. Human life exists करिबा को जगह प्रथमता रहिबा दरकार इक्वालिटी जोडी समानता नाही सब ह्यूमन लाइफ केबे एक्जिस्ट करि परिबनी जदि हमें कहबा ब्रिटिशर माने को पई गोटे प्रकार पनिशमेंट क्रिएट करिवे इंडियन माने को पई गोटे डिफरेंट पनिशमेंट क्रिएट करिवे एक्चुअली इट इज वेरी हार्ट ब्रेकिंग किंतु हमें जेतेबेले इंडियन माने को पई किछ रूलर तयारी करिबा इट वुड बी वेरी हार्ड बट when students आमे आमर उपादेयता को बेस करी रूल ऑफ रेगुलेशन फॉर्मुलेशन करिबा इट वुड बी हार्ट वर्दिंग और वर्थ सेइंग तण पिला तमे चूज करो आम पई कोडा प्रकृति रे बेटर में व्हिच इज द बेनेडिक्शन टू अस व्हिच विल प्रोवाइड सफिशिएंट aptitude of human welfare that the pleasure not relating to British law till then it would be benedicted by the law of the Indians that is known as Indian law or Indian penal तेणु पिला हमें देखिबा जेतेबेले ब्रिटिशर माने इंडियन मान को बाडौथिले इंडियन माने ब्रिटिशर मान को बाडौथिले सेतेबेले फ्रेमवर्क करौथिला सेपरेट सेमानक पई गोटे नियम होतला जोटी कि ब्रिटिशर रा जूरी जज माने कोन करिवे रिप्रेजेंट करिवे इंडियन मानक पई गोटे प्रकार कॉम्प्लिकेटेड टास्क ब्रिटिशर मानक पई रहउथिला इजियर और फ्लेक्सिबल टास्क जोटा ब्रिटिशर माने कोन करथिले टिके रिलैक्स करथिले इंडियन माने हाथ से रेलवे कंपार्टमेंट रे गला बळको ब्रिटिशर माने पेमेंट करिवे इंडियन माने पेमेंट करिवे ब्रिटिशर माने सीट रे बसी करी जेबे इंडियन माने कोन करिवे स्टैंडिंग रे जाउथिबे भाबिले केते पैथेटिक इवन ताको पई मध्ये चेयर फांका रहो भाबिनियो so one type of a discrimination was going there in one type of a social inequality was going in which was not bearable so far as the first premier Jawaharlal Nehru is concerned was concerned and will be concerned. So students, benches and chairs were also reserved for Europeans in public parks and other places. I was filled with resentment against the alien rulers of my country who misbehaved in this manner, and whenever an Indian hit back, I was glad. Listen, students. I was filled with resentment, dissatisfaction. Chapter sarila pare warning would be dictated karinaba against the alien means foreign videshi foreign of my country who misbehaved in this manner, and whenever an Indian hit back I was glad जेतेबेले ब्रिटिशर माने मिसबिहेव करथिले इंडियन मान को मोटिके असंतुष्ट होथिले डिससैटिस्फाइड होथिले एवं जेतेबेले इंडियन कोन करथिला ताको विशेष करी बाडौथिला किबा ताको चैलेंज करथिला सेतेबेले मन कोन करथिले not infrequently one of my cousins or one of their friends became personally involved in this individual income and then of course we all got very excited over it अवश्य हमें बहुत एक्साइटेड होथिलु जेतेबेले ब्रिटिशर अगेंस्ट रे कोनसे प्रकार एक्शन दिया होथिला one of the cousins was a strong man of the family and he loved to pick a quarrel with an Englishman or more frequently with Eurasians who perhaps to show up their oneness with the ruling race were often even more offensive than the English official or merchant. Such quarrels took place especially during railway journey. आमे जेतेबेले काहा को माडा गोळे न परिबा आमे सेतेबेले कोन करिबा आमो ठारू बळबान गोटे लोक को सेट कर दबा ता सारे केम युद्ध
नेहरू तो फाइटिंग करि पार नथिले तांकर जने कजिन थिले से थिले स्ट्रांग बॉडी बिल्डर ये स्ट्रांग मैन ऑफ हिज फैमिली से जते बेले जोटी कॉन्फ्लिक्ट होउतिला से चैलेंज को से फेस आ पर्टिकुलरली एक क्वारल बा कॉन्फ्लिक्ट गुडा होउतिला बहु जगह रे रेलवे जमी much as I began to resent the presence and behavior of the island rulers I had no feeling whatever so far as I can remember against the individual Englishmen. I had a hard English governess and occasionally I saw English friends of my father's visiting him. In my heart, I rather admire the English. Listen to English man को किए जेमते गोटा हमर English quotation अछि हमर particularly hate the sin but not the sinner. तमे पाप को घृणा करो किंतु पापी के नहीं. In a similar way, हमें English man को घृणा करते ले सकता. किंतु English का घृणा करते. It is the portrait of Nehru. कारण the development of India in science and technology is well furnished through the medium of English. जब भी तुम मान के भीतर almost all are science students. यदि हमें देखिबा the term science ର origin it is also relating to the vernacular literature of English. Science रे जति के development almost all are cordially and coefficiently related to English literature. तेणु नेहरू केबे चाहू नथिले इंग्लिश रो विरोध रे बट यदि हमें जेतले कहबा इंग्लिश मैन को मध्ये से पसंद करथिले सेति कहीं द इंग्लिश मीन्स द पीपल ऑफ इंग्लैंड बट सेतबेले मध्ये इंग्लिश रो जो गवर्नेंस थिले विशेष कर तमे देखिबो गवर्नर रो जेंडर जदि हमें कहबा गवर्नेंस से मानक सहित मध्ये तांकर रहिला रिलेटिंग टू फ्रेंडशिप और मोर प्रोफाउंडली जोटा ही से करूथिले दैट वाज फॉर द एक्चुअली एलिमेंट ऑफ इंडिया's डेवलपमेंट केतरा ग्लोसरी रही sheltered means protected secure uneventable means dull and boring overbearing means proud or arrogant Eurasian means European and Asians conflicts means difference acquitted means not found guilty resentment means anger once dissatisfaction alien means foreigner infrequently means occasionally encounters means meeting and offensive means review. Next students, what is the opinion of Nehru thereafter students? In the evenings usually many friends came to visit father and he would relax after the tension of the day and the house would resound with a tremendous laughter. His laugh became famous in Allahabad. Sometimes I would peep at him and his friend from behind a curtain trying to make out what these great big people said to each other. Nehru का father जाने थी वो मोतीलाल नेहरू, exponent advocate of England, richest personality, talented, and so on and so forth and what not. नेहरू का बापा बहुत किछि थिले actually आई में जदि कहबा जाने प्रिज्यूमेटर जते बेले ताका फ्रेंड माने ताका बापा का संग माने सब घर को आसंदी केते बेले ना दिन तमाम परिश्रम कला परे टिके रेस्ट आवर आसंते किछि डिस्कशन करंती आ सब बेले कोन करते टिके बड़ पार्टी रे हसीबा को चेष्टा करते केना आज काली गोटे भलो जोग हे गेलानी प्राणायाम हेलानी बड़ पार्टी रे हसीबा किंतु क्लास रे नहीं सकाळ उठी के हसा आसी कले टिके माइंड ता टेंशन फ्री होबो आ लोक मानकर माइंड ता टिके रिलैक्सेबल होबो जोटा सपोर्ट देबो टू लेसन डायबिटीज जोटा सब बेले टेंशन हे गिरी सब बेले टेंशन हेला द्वारा कोन बना विशेष करे हमर बॉडी रो टिके डिग्रेडेशन घटुची तेणु तांका सांग माने पळे आस्तिले गोटे मेरी मेकिंग थिला जेतेबे से कहउचंदी रिलेटिंग टू द प्लेस इन अलाहाबाद नेहरू सेतेबे छोट दिले से परदा पछर रहि के देखुतिले तांका बापा आ तांका सांग माने सब कोन कथा बार्ता होचंदी कोन हसा छै so students if I was caught in the act I would be dragged out and rather frightened made to sit for a while on father's knee once I saw him drinking claret or some other red wine whiskey I knew. I might often seen him and his friends drink it, but the new red stuff filled me with horror. I rushed to my mother to tell her that father was drinking blood. नेहरू छोट दिले नाली पानी आकाश पानी तेणु ये जो मद जिते बड़े पिउतिले से माने हुस्की ब्रांडी विभिन्न प्रकार अछि सब मदर तेणु नेहरू छोट दिला बड़े देखिले अरे बापा ये नाली नाली कोन रक्त पीले जी जांकि तांको मामा को संग संग कोन कर देतिले सीक्रेट इंफॉर्मेशन दउतिले फादर वाज ड्रिंकिंग ब्लड सो आई एडमायर फादर ट्रेमेंडसली
he seemed to me the embodiment of strength and courage and cleverness. Far above all other men I saw and I treasured, hope that I grew up I would be rather like him. But much I admired him and loved him, I feared him also. हाँ पिले देखिबा आम जीवन रे जदि प्रकृति रे लिविंग गॉड्स अछंदी से होते पेरेंट्स पापा माँ आम जीवन सहित आमर बायोलॉजिकल ठारू आरंभ करू सोशल रिलेशनशिप सब गुड़ाक इम्प्रिंटेड डेवलपमेंट होइछि दैट इज फ्रॉम आवर पेरेंट्स फादर हुंतु मदर हुंतु तेणु सी बापा को कौन करुले गोटे सैड रे किछि भय करुले पुणी मध्य कमेंट करूछंती मो बापा किछि इन्फ्लुएंस जोगो मो गोटे सेतिकी लेवल को आजि जाई करली दैट इज वन टाइप ऑफ अ मेमोरेंडम फॉर ईच एवरी बॉय एंड एवरी स्टूडेंट एवरी टीचर एंड ऑलमोस्ट ऑल तेणु बापा जो कमिटमेंट थिला बापा जो थिला लीडरशिप क्वालिटी बापा सब बड़ क्वालिटी होची गार्डियनशिप क्वालिटी दैट वाज शेयर्ड विथ नेहरू's father. So I had seen him losing his temper at servants and others, and he seemed to me terrible. Then I shivered with fright, mixed sometimes with resentment at the treatment of a servant. His temper was indeed an awful thing, and even after years, I do not think I ever came across anything to match it in its own line. But fortunately, he had a strong sense of humor also, and an iron will, and he could control himself as a rule. As he grew older, this power of control grew, and it was very rare for him to indulge in anything like his old temper. आपिले बापा हमको भल पाते मामा हमको भल पाते समस्त हमको भल पाते समस्त हमको सिंपल बा सूथिंग लैंग्वेज करके इन्फ्लुएंस करते किंतु ता माने हम कोन मैथमेटिक्स रे 80 रु 8 रखिबा हमको गेलो करी कथा कहबी फिजिक्स रे 70 रु 7 रखिबा हम कहबे नाही बापा तू जा सरस्वती पूजा भलो ड्रेस करी तेणु बापा मानकर किछि सिंपलिसिटी रहइबा दरकार बापा मानकर आम पय किछि सेरेनिटी वर्ड रहइबा दरकार किछि फ्लेक्सिबल वर्ड रहइबा दरकार किछि रिजिड वर्ड रहइबा दरकार किछि रिलैक्सिंग बा सूथिंग वर्ड रहइबा दरकार किछि डिसिप्लिनरी वर्ड मध्ये रहइबा दरकार जाद्वारा आमे कोन रहइबा कंट्रोलिंग रे रहइबा भाबिनियो तेणु एठी गोटे टर्म है रिलेटिंग टू आयरन विल मीन्स स्ट्रांग डिटरमिनेशन जे जोटा कमिटमेंट करे सेटा को फुलफिलमेंट आने दैट इज नथिंग बट आयरन विल नेक्स्ट आ गोटे रही छि आज ए रूल रो मीनिंग होछि नियमत आज ए रूल नियम अनुसार इफ वी break water two compounds come to limelight that is hydrogen and oxygen as a rule a week consisting of 7 days try to understand my point of view as a rule the sun rises in the east so students जो टर्म गुडा कम पई कि हार्ड रहबो काने हमें वर्तमान चाहू छे एनीवे सेकंड ईयर कोर्स आसीबा पूर्व फर्स्ट ईयर कंप्लीट होबा दरकार ए स्टोरी गुडा जहां ही आसीबो सब गुडा पैसेज रे आसीबो वर्ड मीनिंग ग्लोसरी कहि दउची फिर भी जदी कहार किछ डाउट रहइला मते तमे कोन करबा आराम से क्वेरी करबो एक्स्ट्रा नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमें कहिनबा रिलेटिंग टू ग्लोसरी पेज नंबर 74 रिसाउंड मींस इको you must be knowing about echo को बार को पक्षी बेसी एक प्रिंसिपल को फॉलो करी थाए बादुड़ी हमर विशेष करी जो अल्ट्रासोनिक वेव पर्टिकुलरली हमें जदी देखिबा सुपरसोनिक हो कि जोटा हो बादल जते बेले बादलटा उड़ी जाउता एना जते बेले साउंडटा बाजे इको आसे सेथु से कोन करिबो ना डायरेक्शन चेंज करे सेटा को उड़ीवा पई बहुत हेल्प करिबा सो स्टूडेंट्स one of my earliest recollections of his temper of this temper for I was the victim of it I must have been about 5 or 6 then listen students so one thing is there well written you must be knowing about the most determination most relating to will most iron will तो मोस्ट सहित जतले हाफ लागि गला तब हमें कोन हिसाब रे करेस्पोंड करी मोस्ट सहित जते बेले हाफ लागिला तब करेस्पोंड करू हमें कोन हिसाब रे ए बळिया बहुत टर्म अछि रिलेटिंग टू स्पोकन इंग्लिश
सेगुड़ाक तुम मान भर जो लिजर रोच हॉस्टल पिला माने पर्टिकुलरली को लोकल पिला आसिले मु डिक्टेट करदेवी नोट डाउन कला व्हाट्सएप रे छाड़ी नेबे कैन माने पारिबा बुझीगला कैन माने पारिबा कुड माने पारिलबा पारिली कुड हाफ माने पारि था मु जीबी आई मस्ट गो मु जीबी आई मस्ट गो मन रख मु जीबी आई मस्ट गो तेरी कौन लगे मु निश्चित जीवी चेक कर मु निश्चित जीवी आई मस्ट गो मु निश्चित जाई थांती आई मस्ट हैव गन आई मस्ट हैव गन मोर जीवा उचित आई शुड गो मोर जीवा उचित थिला आई शुड हैव गन जानि होछि ना नहीं हो One of my earliest recollection each of this temper, for I was the victim of it. Some punishment can be deprived, perhaps. I must have been about 5 or 6 then. I noticed one day 2 fountain pens on each office table, and I looked at them with greed. छोटा पिला माने पाठ पढ़ला बेले पढ़ंतु कि न पढ़ंतु ताको पेन पेंसिल इरेजर एगुडा तो बेसी भल लागे तेनु करी 2 fountain pens देखिले कि ना नेहरू टेबुल ऊपर अछि and I looked at them with greed. ए लोभे रे fountain pen, who invented fountain pen? Fountain pen की invent कर दिले waterman. I argued with myself that father could not require both at the same time. बापा दीटांग पेन मध्ये एट ए टाइम रिक्वायर करिबेनी कोन दी हाथ रे लिखिबे ना कोन गोटे पेन दरकार गोटे पेन ही लिखिबे तने मु कोन करबे ओकिलाती गली तमर दीटा पेन कोन करिवो गोटे पेन लेखो मते गोटे दियो so I helped myself to one of them तुम गोटे नै गली later I find that a mighty search was being made for the lost pen जेतबेले घरे के पचारि दिबे अरे पेन टा के उडला मु जनी की नै गलो बापा को पेन के नै छी and I grew frightened at what I had done, but I did not confess. तमे देखि दियो बिले जेते बेले जणे लोक गोटिए मिछा कथा कहे से मिछ को प्रमाण करिया पय आउ 100 टा मिछा कथा कहइबो लास्ट को धरा पडियो 100 टा माड खाइबो किंतु गोटिए थरा जेते बेले धरा पडि गला जदि कहि देलो आ घर लोक किछि कहिबेनी तले देखो बिले but I did not confess किंतु मु मानिली नै the pain was discovered and my guilt proclaimed to the world पेन टा धरा पडि गला मु चोरी करची सब लोग जानिले देखो बिले father was very angry and he gave me a tremendous thrashing मन रख मते सब thrashing हमर विशेष करी चापड़ा विधा जेते प्रकार हमर आघात हां मो प्रति आसी गला almost blind with the pain and mortification at my distress I rushed to mother तण मन रख जेते बेले गोटे कंट्री ऊपर आ गोटे कंट्री अटैक करे केते बेला हमको सुरक्षा दियंते केना मिलिटरी मैन आर्मी लोक हम घर जदी को जिनिस अछि चोरी हे जिवो प्रोटेक्शन देबे पुलिस बापा जेतले हमको माडर माइले प्रोटेक्शन देबे मामा मामा जेतले माडर माइले प्रोटेक्शन देबे बापा तण करी पेरेंट्स हम पय बहुत हेल्प and for several days various creams and ointments were applied to my acting and quivering little body ते कबिले जेते बेले माडो हेला बेले को जणा पड़े ना घंटे 2 घंटा गला पर तार पेन आसे धीरे धीरे को जगह केमती माडा बसची सेही अनुसार मु कोन कली मु जते प्रकार अछि रिलैक्सिंग ऑइंटमेंट गुडा सब लगेया के चाहि नेहरू करेटा फीलिंग कि तम माने आ पकरो बहुत दूर है तम के मारियो रे I don't remember bearing any ill will towards my father because of this punishment. I think I must have felt that it was a just punishment. It was a just punishment, though perhaps overdone. Listen, नेहरू कन्फेस कले जे प्रकृति रे मु किंतु बापा बाडैले बोली बापांग प्रति मोर किछि खराब भावना आसिलानी इल विल किछि रहिलानी आ कोन मु भाबिली इट वाज ए जस्ट punishment ठीक थिला it was a just punishment just टा को जगह रे लागे particularly गोटे सेंटेंस रे ऑक्सिलरी भार करे करे मैक्सिमम क्वेश्चन आंसर करेक्ट दे रहा है प्रेजेंट हो पास्ट हो फ्यूचर हो एगुडा का जो सेंटेंस रे रही थिबो ता करे करे जस्ट प्लेसमेंट ता करा जाई पारिबो स्टूडेंट्स
किंतु माड़ दिगला टे अधिका माड़ हो गला overdone. But though my admiration and affection for him remained as strong as ever, fear formed a part of them. Not so with my mother. I had no fear of her, for I knew that she would condone everything I did. And because of her excessive and indiscriminate love for me, I tried to dominate over her little. आमे बापा घरे अछंती मामा घरे अछंती विशेष करी नेहरूंकर फिलिंग एटा से देइचंदी तांको बापाଙ୍କ प्रति तांको टिके भय रहितिला आ तमे देखिबो जे जहा को जते गेला करिवो सेते भयटा दूरेई दिबो मा एते मात्र ताकू एकई लवण विशिकेशन जेंति कृष्णଙ୍କ भलिया तांको आदर करूदिले तनो मामाଙ୍କର किछि एक्शन तांको ऊपर किछि नथिला तमे देखिबो मा माने तमु जते स्ट्रेट करदिबे तमे सेते जाऊ जाऊ होउदिबो सेते आंसर बैक करूदिबो बापा माने जते बेले कहिबे चुप रही जो कहना बापा होते बापार घर फाइनेंस मिनिस्टर बैंक एटीएम यदि बापा कथा तुम जुक्ति कल झगड़ा कल काली सका समर सब मोबाइल रिचार्ज आरंभ कर जिते इंपोर्टाट जिन अच्छी बहुत तेणु बापा कथा को आम रागी जाऊ पुणी बेले बेले बापा तुम गोड़ बिंदुची कि हाथ बिंदुची कि बापा सागर टी कंप्रोमाइज करने पड़े नेक्स्ट स्टूडेंट्स I saw much more her than I did of a father, and he seemed nearer to me and would confide in her when I would not dream of doing so to father. She was petite and short of stature and son. Relating to mother, तंका माँ थिले गेड़ा लोक. I was almost as tall as she was and felt more of an equal with her. माँ जितने बाड़ी एक ऐसे कि डरे बे ये देखिए माँ कौन माँ तो मोह हाइट लोग से ना मिटाई ना डरी बापा देखला लोग हाइट वाला लोग कोई जानी माँ टिके शॉर्ट गेड़ा लोग कोई जानी माँ बड़े वाला लोग ये कौन करियो जरा तो आता खाना उधर ही बुड़ी पड़ी माँ सब क्रिकेट खेलने वाले कितने रहेंगे तेणु जे बेसिकली तंकर बेसी भय नथिला कोन मामा बहुत सोलाक्सिंग थिले बहुत फ्लेक्सिबल माइंड लोक थिले बहुत हम्बल थिले बहुत अफेक्शनेट थिले बहुत लविंग थिले सो स्टूडेंट्स I admired her beauty and loved her amazing small and beautiful hands and feet. She belonged to a special stuff from Kashmir, and her people had only left the homeland 2 generations. तांकर माँ जी थिले काश्मीर पंडित तमे जानि थबो जोटा कि विशेष करी वंशधर रहउचंदी हमर गांधी फैमिली रो तनु बहुत जेंटल थिले बहुत जेन्युइन थिले बहुत डेवलपिंग मध्य थिले ग्लोसरी रहिला रिकलेक्शंस मींस मेमोरी कन्फेस मींस एडमिट मन रखिबा प्रोक्लेम मींस डिक्लेयर मोटिफिकेशन मींस लज्जा डिस्ग्रेस मींस डिसऑनर क्विवरिंग मींस शिवरिंग ट्रेम्बलिंग एडमिरेशन मींस प्रेज फॉरगिव होउची कोन एक्चुअली पार्डन जोटा क्षमा करि दबा देन डिस्क्रिमिनेटिंग मींस overwhelmingly dominate in the sense influence or I mean persistence. Next students, another of my early confidence was a Munshi of my father's, Munshi Mubarak Ali. He came from a well-to-do family of Badar. The revolt of 1857 had ruined the family and the English troops had partly exterminated it. नेहरू का जीवन काल भितर जने आसीथिले लोक तांकर नाम होची मुंशी मुबारक अली तांकर मध्ये किछि ना किछि इंप्रेशन रहितिला तम जीवन काल भितर पिले देखिबो तम जीवन रो किछि गोटे गोटे टर्निंग पॉइंट आसीथिबो से टर्निंग पॉइंट किए तम बापा हुंतु मामा हुंतु तम टीचर हुंतु किबा तमर जे वार्डन रहिचंदी सिए हुंतु तमर सिक्युरिटी गार्ड हुंतु समस्तक पाखरु किछि ना किछि जीवन रे शिखिबार अछि केमिति गोटे लाइफ चेंजिंग मूवमेंट आसीथिबो जोटा कि तुम कोन करियो एबे भी सुदा तुम मन रे थिबो तमे जदी मामा का पाखरु कि स्नेह ममता शिखिलो बापा का पाखरु कि डिसिप्लिन शिखिलो इवन बहुत भलो भलो नोबल वर्चुअस क्वालिटीज अछि डिफरेंट पीपल पाखरु डिफरेंटली हमें शिखि पारु तेनु मुंशी मुबारक अली का पाखरु शिखितले नेहरू कर किछि ना किछि इम्प्रिंट अछि आइडिया रिलेटिंग टू हिज पर्सनल डेवलपमेंट Now, the revolt of 1857 कौन दिला फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस जाक हमें को सिपाही मोटे ने तो सिपाही मोटे पर टोटली कौन हला डिस्टर्ब होई तला तार फैमिली का विशेष करी मुंशी मुबारक अली कर एवं से रहितले कोठी नेहरू कर डिस्ट्रिक्ट दिस अफ्लिक्शन had made him gentle and forbearing with everybody especially with the children and for me he was sure heaven of refuge whenever I was unhappy or in trouble देख पिले जिते बेले जने लोक किए ता पिला को हरैछि जने लोक ता स्त्री की हरैछि जने लोक ता बापा मां को हरैछि से सेते बेले निर्विकार हे जीवो
से गोटे नेचुरल सेंट है जो जने प्राकृत साधु पलटि जीव तांकर समस्त को सर्वक्षमा आसीबो समस्त को से बांधिकी रखिबो निजर बोली समस्त को स्नेह ममता आसीबो जेहेतु मुंशी मोबारक अली फैमिली रे केही नथिले नेहरू छोट पिला थिले तेणु नेहरू कोन करथिले से एक्सट्रीमली लाइक करूथिले नेहरू को प्रति तांकर अटैचमेंट रहिथिला नेहरू प्रत्येक मुहूर्त तांको रेस्पेक्टेबल हिसाब रे कंसीडर करूथिले एवं से तांको दउथिले कोन रियल अफेक्शन सो स्टूडेंट्स ये ऑब्वियसली काटवा पिला को तो आई वाज अनहैप्पी और इन ट्रबल जेते बड मोर किछि ट्रबल थिला से मते कंसोलेट करथिले with this fine grey beard he seemed to my young eyes very ancient and full of old time lore and I used to snuggle up to him and listen wide eyed by the hour to his innumerable stories old tales from Arabian Nights or other sources on accounts of happenings in 1857 and 58 listen students life is mended by stories life is rectified by stories life is experienced by stories according to Samuel Johnson गोटे कोटेशन मन रख पिले तमे जानि थिबे छोट बेले टीचर माने कहंती महापुरुष को जीवनी पढ़ा सब फिलोसॉफी कर गोटे गोटे प्रकार फिलोसॉफर पर रहय कोन एट्रिब्यूशन टुवर्ड्स सोशल डेवलपमेंट टुवर्ड्स बिल्डिंग ऑफ ह्यूमैनिटेरियन कैरेक्टर्स हम जीवन काल भीतर हमें किछि ना किछि कहां का कोई इंस्पिरेशन पाई करू जदि हमें इंडिया रो रिलीजन बाबत किछि सिखिया को चाहिबा जानिया को चाहिबा तले स्वामी विवेकानंद का लाइफ हिस्ट्री पढिबा जदि भारत रे हमें कल्चर बाबत किछि जानिबा को चाहिबा तारे रविन्द्रनाथ ठाकुर जीवनी पढ़िया को जदि हमें साइंस और टेक्नोलॉजी रो डेवलपमेंट कथा किछि जानिया को चाहिबा एपीजे अब्दुल कलाम रो लाइफ हिस्ट्री पढ़िया को पड़ू सो वन एंड सो फोर्थ तो जीवन रे लिमिट कहार किछि नै तमे एठी वर्तमान अछ 40 45 जन तम समस्त नेचर समान नुए तम समस्त कंडक्ट समान नुए तमर मैनर समान नुए किंतु तमे प्रत्येक फील्ड रे केही ना केही सुपीरियर अछि जे पाठरे भलो अछि जणे जणे साठे भलो अछि जणे इंग्लिश रे भलो थिले आ जणे फिजिक्स रे भलो अछि सेमिति केबे हमें ऑलमोस्ट ऑल इक्वल कहि परिबानी कि ऑलमोस्ट ऑल का को डाउन करता डिग्रेड करि परिबानी इन ए सिमिलर वे मुंशी जी कौन करुथिले ना विशेष करी 1857 और 1858 रो जो रियल स्टोरी गुडा का इंप्लिकेट करुथिले डिस्क्लोज करुथिले रिवील करुथिले कहा करे नेहरू पागे जेतले से पुराना कथा गुडा सुनि नउथिले प्रकृति 1857 ने एम वार लाइक सिचुएशन हला एतरे भलो भलो सब सुपीरियर लीडर माने एक्सपायर्ड पले ब्रिटिशर पाखरो इंडिया हारिबार एकमात्र कारण कोन इंडिया यूज करथिला ट्रेडिशनल वेपन तुम जानिथिबो झांसी रानी लक्ष्मीबाई तांतिया टोके वीर सुरेंद्र सर ये माने सब कोन करूथिले ना जे ट्रेडिशनल वेपन यूज करूथिले ब्रिटिशर माने कोन करूथिले गन यूज करूथिले कारण ब्रिटिशर माने जीतिबे मॉडर्न वेपनरी से माने यूज करूथिले ये जो कथा गुडा को वन टाइप ऑफ एक्चुअली हार्ट ब्रेकिंग न्यूज आस्थिला फ्रॉम मुंशी जी सो फार आज नेहरू इज फर्स्ट नेक्स्ट रूल्स दिस affliction had made him gentle and forbearing with everybody. It was many years later when I was grown up and Munshi died, and the memory of him still remains with me as a dear and precious possession. Munshi ji expired kari gale. तांका लाइफ रे एंडिंग आसिला किंतु से एंडिंग टा मो जीवन रे किछ रिफ्लेक्शन आनिला मु जोटा ही सुनी दिले बट आई हैड लिसन्ड आई ट्राइड बाय मी टू मेक इट ए रियल फैक्ट मु ताको गोटे वास्तविक दृष्टिकोण रे प्रचार करबा को चेष्टा करले बस एटा मोटे रियल पोजीशन हिसाब रे हेल्प कर देयर आर अदर स्टोरीज आल्सो दैट आई लिसन टू स्टोरीज फ्रॉम ओल्ड हिंदू माइथोलॉजी फ्रॉम द एपिक्स द रामायण द महाभारत दैट माय मदर एंड ऑन्ट यूज्ड टू टेल अस हम जीवन रे तीनटा तुम ढोलू ना हम जीवन रे तीनटा घटना परिवर्तन आनी थाए हमर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जेमति तीनटा दिन तीनटा समय हम पई इंपोर्टेंट हमें सब बेले कहू प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर बा पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर किंतु हम पई दी मोस्ट इंपोर्टेंट होची प्रेजेंट हम जीवन रे सेमति मन रख हिंदू मैथोलॉजी अछि हिंदू मैथोलॉजी तीनटा होची द ग्रेट कोन द रामायण द महाभारत द कौन कौन हमारा
भगवत गीता आउ कौन रामायण आउ कौन महाभारत आम जीवन रे आमे कौन करिबा सेटा आमे शिखु कोठु द गीता गीता से कहती एक्शन इज गॉड गीता रे तमे जोउठी देख जो पृष्ठ रे देख तार मुख्य उद्देश्य होची कर्म ही भगवान एक्शन इज गॉड आमे जेते बेले ता पर शिफ्ट करिबा कोठी की ना प्रकृति रे आमे कौन जानिबा कौन करिबा गीता रू जानिले कौन आमे जानिबा रामायण रू रामायण आमे जानिले हमर गोटे स्टूडेंट हिसाब रे हम पे कौन नियति जानिबा दरकार कैरेक्टर तेणु आमर पुरुषोत्तम किए मैन ऑफ कैरेक्टर किए लॉर्ड रामचंद्र कौन जानिबा आमे शिखिले कोठु रामायण रू आमे केमिति मरिबा लोकटा मला बेले कौन करा जाए टिके भागवत पढ़ी दियम गोविंद 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 तेणु मुख्य जगह केमती गोटे लोकटा प्राप्ति पाई जाऊ से आमे कोठु ना भागवत तने जीवन मन रख बिले सेमती ओल्ड माइथोलॉजी रे बहुत किछि जानिबार अछि सेगुडा को मध्य नेहरू कोन करथिले जानिबो के टाइम अबले my aunt and the widow Pandit Nandlal was learned in the old Indian books and had inaccessible supply of details and my knowledge of old Indian mythology and folklore became quite considerable. So जो मु knowledge पाइली that was became considerable in the sense reasonable. तमर जदि knowledge अछि बुद्धि विवेक खटाई कि तमे कोन करिवो सब कार्य रे पिला सफल हासिल करि परिबो जदि नॉलेज नहीं आमे कौन से फील्ड रे सुपर हे करबानी स्वामी विवेकानंद को जने क्वेश्चन कर दिले जनकर फियर ता केते बेल अवॉइड हबो भयटा मनुष्य मनरु केते बेल दूर ही जीवो से गोटे क्वेश्चन आंसर दे दिले व्हेन वन एक्वायर्स नॉलेज जेते बेल जने ज्ञानी ही जीवो ता करे भय रहिला बुझि पल्ला नै पिले एटा टिकेट ट्राई टू मार्क इट वी विल स्टार्ट फ्रॉम 77 onwards. That is page number 78, mark it, unit 5. The book card dila. Reading करिबो जते जार डाउट करछि विशुद्धि बार Sir, question. Do you want to go outside your permission students or